Hello guys, in this video we will discuss about the components of government budget. In the last video we have discussed about the objective and the concept of government budget, and now we will discuss that what are the components. See, in any kind of budget constitutes of two important things, that is receipts and expenditure. So government also decides that from what sources they will get their income and on what things they have to incur expenditure. So government frames a plan which we classify or which we call it as budget. So we have two components of budget, revenue and capital budget. Revenue budget is related to the recurring activities of government. That on what recurring activities, recurring means that are based on regular level, that is on day-to-day activities. So the government has to incur expenditure on certain things regularly. For example, they have to give salaries to the government employees, they have to provide pensions, right? And then revenue receipts. See, receipts is income. Government has government has many sources from which it gains income. For example, taxes, GST, property tax, income tax, etc. So from these sources, it is an income source of government. Fine. So revenue budget is, that is, it occurs during the normal course of activities of government. Okay. It affects the day-to-day functioning of government. So revenue budget is of two types, that is revenue receipts and revenue expenditure. See, revenue है तो means revenue तो होगा ही. Budget है, it means it consists of receipts and expenditure as we have discussed over here. ठीक है, तो receipts एक हो गया revenue receipts and the second one is revenue expenditure. Revenue expenditure government का खर्चा, revenue receipts government's income. The second is capital budget. See, capital budget is non-recurring source. ठीक है, इट इज नॉट द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज. मतलब गवर्नमेंट जो अपना खर्चा और अपनी इनकम ले रही है without the normal courses of activities, means it is like you can say that at some sort of time, at some certain point of time, they can get the income, they have to incur expenditure. Like for example, there is loss on the sale of machinery. This is a kind of लॉस हुआ तो उनका कैपिटल है, रोज रोज तो नहीं हो रहा, इट इज नॉन रेकरिंग. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रेकरिंग एक्टिविटी. सो द नेक्स्ट इज द कैपिटल रिसीट्स इज capital budget is classified into two types, that is capital receipts and capital expenditure. So similarly, budget है तो it means it constitutes receipts and expenditure. So capital receipts are those receipts that are the government gains income from non-recurring sources. See, capital receipts और capital expenditure की जब हम बात करते हैं ना, we are talking है कोई भी receipts या expenditure की बात करते हैं, we are talking about कि money का inflow means is there outflow of money or inflow of money. कि गवर्नमेंट की ट्रेजर बॉक्स है, ठीक है. सो क्या मनी उसके अंदर मतलब गवर्नमेंट की ट्रेजरी बॉक्स में आएगी या मनी उसमें से जाएगी. सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ, सपोज हमने बोरो किया कुछ भी, वी हैव बोरोड, मतलब गवर्नमेंट हैज बोरोड मनी फ्रॉम आर IMF, मान लो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इट इज अ काइंड ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो मनी लेंड करते हैं. IMF से जब उन्होंने बोरो किया तो जो सपोज दे हैव
taken the check of 50 crores. ठीक है. Now these 50 crores will enter into the transaction of government. ठीक है, ये 50 crores यहाँ आ गए, तो मनी का क्या हुआ? इनफ्लो. तो जब मनी का इनफ्लो होगा वी विल रिकॉर्ड इट एज कैपिटल रिसीट्स. ठीक है. एंड कैपिटल रिसीट्स की अब गवर्नमेंट रोज रोज तो नहीं लेगी लोन. अगर वो रोज रोज लेती देन वी विल क्लासिफाई कि यस दिस इज रिवेन्यू रिसीट, बट द गवर्नमेंट इज टेकिंग द लोन ऑन सम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, and it is non-recurring. So because of its effect of non-recurring, we are classifying it in the capital budget. ठीक है. अब उन्होंने बोरो कर लिए, चलो दिस इज देयर कैपिटल रिसीट. ठीक है. अब they have to pay the interest on that loan. ठीक है. and interest is on the regular basis. ठीक है. तो because it is on the regular basis, तो रेगुलर बेसिस वाला किधर आ जाएगा? रिवेन्यू में. एंड नाउ अब think yourself, the money is inflowing or there is outflow of money. Obviously the government is giving the interest, so there is outflow of money, right? So if the money is outflowing, that means we will record it as expenditure. So expenditure, will it be revenue expenditure or capital expenditure? अब इंटरेस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पर दे रहे हैं, राइट? एंड इफ वी आर सेइंग अबाउट रेगुलर, इट मींस इट इज रेवेन्यू, एंड देयर इज आउटफ्लोइंग ऑफ मनी, दैट मींस इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. So you have to remember 2 points over here, that if there is inflow of money, ठीक है, inflow of money, that is गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, then we will consider is that receipt or income. ठीक है. हम उसे रिसीट में करेंगे, चाहे वो रिवेन्यू हो, either it is revenue receipt or capital receipt. And similarly if the money is outflowing, that is government के खजाने खाली हो रहे हैं, then we will classify it as expenditure because obviously उनके पैसे खत्म हो रहे हैं, उनको एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ रहा है. अब आगे हमें वी हैव टू फर्दर सी दैट इज इट कैपिटल और रिवेन्यू, राइट? ये भी आखिर एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रिवेन्यू है. सो हाउ विल वी क्लासिफाई दिस? सी इफ दैट रिसीट इज ऑन रिकरिंग बेसिस, रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी उनको मिल रही है, मान लो डे टू डे एक्टिविटी होगी, सपोज गवर्नमेंट टेक टैक्सेस, ठीक है, तो वो टैक्सेस नॉर्मल पीपल को ही देने पड़ते हैं. सो दोज टैक्सेस आर क्लासिफाइड एज द रिकरिंग एक्टिविटीज, सो इट इज रेवेन्यू रिसीट ऑफ गवर्नमेंट. सिमिलरली if it is non-recurring or non-regular, then we will classify it as capital nature. ठीक है, it is capital receipt. Similarly with expenditure, if it is non-recurring, it is capital. If it is recurring, it is revenue expenditure. So this was all about revenue budget, capital budget, and we will do it in detail in the next lecture. I hope this is clear to you. Thank you.